Unit-3 new media. Now what is new media? अच्छा, before getting into new media, let's just focus on what are the two types of mass media. ठीक है, जो mass media है उसका एक पार्ट है ट्रेडिशनल मीडिया और दूसरा पार्ट है न्यू मीडिया. ठीक है, अब ट्रेडिशनल मीडिया क्या है? ट्रेडिशनल मीडिया बेसिकली है टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, प्रिंट हो गया, एनीथिंग विच डजंट इन्वॉल्व इंटरनेट. ट्रेडिशनल कहीं ना कहीं हम लोगों को ओल्ड लगता है, राइट? तो इट इज़ समथिंग यू कैन से ओल्ड मीडिया. ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है. बट वॉट इज़ न्यू मीडिया नाउ? न्यू मीडिया इज़ बेसिकली anything which involves internet. Now example can come as in television is internet is an example of new media or traditional media. So now television, nowadays television do come with internet as well, so you can connect internet with television, right? So then television with internet, television which is connected to internet, or radio which is connected to internet, you can or we like basically these come in the category of new media only. So what is new media? New media is something which involves internet, a media which involves internet basically. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट न्यू मीडिया. न्यू मीडिया वो है जो इन्वॉल्व करता है इंटरनेट. नाउ न्यू मीडिया चैप्टर में सिर्फ एक ही चैप्टर, न्यू मीडिया यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है विच इज़ कन्वर्जेंस एंड न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ जो टर्म है कन्वर्जेंस, व्हाट दैट टर्म मीन? कन्वर्जेंस का मतलब होता है बेसिकली टू कमिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर. आइस एज इसका फर्स्ट सब टॉपिक है. आइस का जो मतलब ICE जो है उसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट. ठीक है, ये 15 मिनट्स में आई एम रियली गोइंग टू इन नेक्स्ट 15 मिनट्स आई एम गोइंग टू कवर दिस होल चैप्टर. दिस इज अ रिविजन वीडियो. तो इन्फॉर्मेशन इट सेज दैट फोनोग्राफ और कैमरा जब एग्जिस्टेंस में नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है, तो अ पर्सन यूज टू गेट, if a person wanted to know about a person, another person, and or if a person wanted to know about a particular place, then he or she used to go for a first hand experience. But when camera came into existence, तो इसके थ्रू हम लोगों को एक एनालॉजिकल आइडिया, फोटोग्राफ के थ्रू एक एनालॉजिकल आइडिया मिलने लग गया अबाउट व्हाट, अबाउट अ प्लेस. एंड ऑब्वियसली अ पर्सन के बिहेवियर पैटर्न को हम लोग समझ नहीं पाएंगे, बट अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन के बारे में हम लोग समझ पाते थे. इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस फॉर श्योर, बट इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस ऑफ इन्फॉर्मेशन. सेम गोज विथ रिकॉर्डेड साउंड. रिकॉर्डेड साउंड भी एक एनालॉजिकल आइडिया देता था जस्ट एज कैमरा अबाउट अ पर्सन, बट पर कैमरा अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन के बारे में बताता था ऑब्वियसली जो दिख रहा है, पर रिकॉर्डेड साउंड्स जो रिकॉर्डिंग होते थे उससे इंसान के आवाज़ का पता चलता था, द वॉइस ऑफ अ पर्सन और पर्सन's वॉइस, राइट? नाउ it says that information has been privileged denied to the masses till the early part of 20th century. So to the society in the general and the world at a large, one had to have the privilege of being highly educated and means of opportunity at one's disposal for travel. So basically at the early part of 20th century, if a person wanted to know about the society where he or she lived in, or about the world at large, he should have two things. First education, as in the person should have, should be highly educated, and second, the person should have the opportunity to travel from one place to another, which was not possible for everyone. It was only possible for rich European nations and for colonized world. तो फिर वॉल्टर लिपमन जो है वो एक अमेरिकन इंटेलेक्चुअल थे और मीडिया फिलोसोफर थे. उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल बुक लिखा नेम्ड एज पब्लिक ओपिनियन इन 1922, वेयर ही रोट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मीडिया इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी. सो he basically wrote about the functioning of the government because he wanted to inform people. ठीक है, he wanted people to know about the media in the democratic society. What is the role of media in the democratic society? He also wrote about the average man's role or responsibility. Average man should be well informed to make good choices. He wrote about that as well. Functioning of democracy, where average man is getting information to make good choices. He had expressed the concern that that there was no advocate system available at that time. ठीक है, उस टाइम उतने अच्छे सिस्टम नहीं थे. मास कम्युनिकेशन का जो रीच था, वो लिमिटेड था. ठीक है, वो कुछ ही सोसाइटी तक पहुंचते थे.
वो तब भी मास मतलब जो मास मीडिया था वो रेडियो ही और न्यूज़पेपर ही होते थे, पर उस टेलीविज़न उतना नहीं होता था। इंटरनेट तो बहुत दूर का ज़माना है, इंटरनेट तो होता ही एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, पर जो मतलब इन्फॉर्मेशन था उन लोगों कुछ लोगों तक ही पहुँचते थे, सारे लोग तक नहीं पहुँचते थे, सो रीच जो था वो लिमिटेड था। तो टुडे वी नो दैट मास मीडिया हैज़ लार्जली रिमूव द कॉज ऑफ कंप्लेंट एज फार एज द एबिलिटी ऑफ चैनल्स। देयर आर मेनी चैनल्स नाउ in existence, like they're existing and they are informing people, they're spreading information, but now still there's a question. What is the question? That whatever we are hearing or whatever we are getting the information, whether the information is filtered or unfiltered, right? जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है उसका क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी सही है कि नहीं, राइट, वो राइट है इन्फॉर्मेशन की नहीं। देन फिर दो कहाँ गए, हाँ, मेजर दो मतलब टू मेजर कंटेम्प्रेरी थिंकर्स एंड सोशल साइंटिस्ट के बारे में पता चला, मतलब चलेगा हम लोग को। दो मेजर कंटेम्प्रेरी थिंकर्स कौन है? मस्जिद तहरीनियन एंड अमृत्या सेन। तो मस्जिद तहरीनियन ने 3 मेगा ट्रेंड्स के बारे में बताया था, ठीक है। 3 मेगा ट्रेंड्स क्या है? ग्लोबलाइजेशन, रीजनलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन इज समहाउ प्रिसीडिंग rapidly aided by the technical process and global and national institution, by technical process and global and national institutions, but democratization is somewhere lacking behind. अमृत्या सेन ने भी अपना ओपिनियन रखा। उन्होंने बोला कि ही कंसिडर्स द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एज अ distinguished contribution of 20th century and adds the challenge of 21st century in the completion of democracy. He believes, 3 beliefs लिखने हैं। He believed that democracy and associated political freedom are significant part of human freedom. Now democracy enhances political attention that weaker people get, and in democracy formation of values and priorities takes place through public opinion and discussion or participation, representative participation. तो बिफोर इंटरनेट जो था उसके फीचर्स के बारे में बताया गया बिफोर इंटरनेट के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मेजर क्रिएटेड मैसेजेस क्रिएटेड, सॉरी, एक प्रोसेस है जिसमें ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस आर क्रिएटेड बाय और ट्रांसमिटेड बाय फ्यू, बट रिसीव्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स, वास्ट नंबर ऑफ रिसीवर्स। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशन है उसका वो जाइगैंटिक है, बड़ा है, ठीक है। इट हैज़ ह्यूज टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू। अब ये इंटरनेट जो होता है वो कहीं ना कहीं एम्पावर करता है एन इंडिविजुअल टू पोस्ट डेटा। There are many sources which inform, which give, like, which where the informations are same basically. So a person gets an idea that this information is somehow similar, that means this information is real, okay. It strengthens democracy for sure and the socio-political implications of the new information order, okay. So this is all about the chapter. Now what are the questions? Firstly, what is the role of technology in the development, technologies in the development of the age of information, where we have to write about whatever whatever in the first paragraph we read of information, उसमें we have to write that technologies जब exist नहीं करती थी, उसका existence नहीं था उतना, then people used to go for first hand experience. If the person wanted to know about another person or about a particular place, the person used to go visit that place, used to meet the person. But when camera and phonograph, these came into existence, then a person used to get through photograph, a person used to get an analogical idea about about the other person's appearance or about the particular place. Same goes with recorded sounds, ठीक है। recorded sounds के through हम लोगों को दूसरे इंसान के voice के बारे में पता चलता था। The second question is, according to Masjid Tehreenian, what are the 3 megatrends? 3 megatrends थे globalization, regionalization and democratization. तो उसके बाद हम लोग ये भी लिखना पड़ेगा कि globalization and regionalization were basically proceeding rapidly, technical process, national or global institutions पे, but democratizations were lacking behind. Describe the relationship between information and democracy according to Walter Lipman. तो basically information was Walter Lipman एक पहले तो introduction देंगे कि एक American intellectual थे और media philosopher भी थे. He basically wrote a book, a fairly influential book named as Public Opinion in 1922, where he wrote about the functioning of government and the role of media in
role of media in the democratic society. So for him, he basically wrote that because the spread of information was not what the reach of mass media at the early part of 20th century was limited. Okay. So according to him, democracy is something which where a person, average man, a voter, knows, is well informed that how to make good choices and what, like, इन्फॉर्मेशन मिला जिससे कि वो गुड चॉइस बना सके. तो यू हैव टू राइट द होल पैराग्राफ. नाउ अमृत्या सेन का जो तीन चैलेंज, तीन बिलीव्स है. फर्स्ट बिलीफ वाज दैट डेमोक्रेसी जो है, इन डेमोक्रेसी इंफॉर्मेशन प्रायोरिटीज फॉर्म होती है. बट क्या डेमोक्रेसी जो है, एंड democracy and associated political freedoms are integral part of human freedom. And then we have to write that democracy enhances political attention that weaker people get, and in democracy formation of values and priorities takes place through open public discussions and representative participation. So this was all about the questions. There were only 4 questions, and if we do these 4 questions, we'll get to know about the chapter. Like, we'll complete, or we'll cover the whole important, all the important topics of this chapter. ये chapter बहुत छोटा है, hardly 2.5 पेज का है. So I mean 2.5 पेज का है, तो it's quite small chapter, but each line is very important. And as we all know that mass media book is written, all the chapters are written in a very unattractive manner. No key terms of this of this chapter is highlighted, so it somehow doesn't attract a person to read. So if we miss one line, we can miss anything, we can miss a really important part of this chapter. So I would suggest you all to read the chapter line by line. So thank you for watching, and in this video I have basically covered the whole chapter. This was a revision videos, and in this 15 minutes we have covered all the subtopics of convergence and the new possibilities of communication.